very warm welcome. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Leading cryptocurrencies are feeling the hit from the increased regulatory motive to tame investors' activity in this highly volatile and hard to categorize asset class. Bitcoin tumbled more than 5% to fall below $21,900 to its lowest level in about 2 weeks. Much of the decline came after crypto exchange Kraken bowed down to US Securities and Exchange Commission, the financial markets regulator in the US. Kraken was asked to discontinue with crypto staking as a service platform for US customers and pay $30 million towards penalty. मूविंग ऑन, पैक्सोस ट्रस्ट कंपनी बाइनेंस USD और पैक्सोस डॉलर के पीछे मौजूद न्यूयॉर्क बेस्ड स्टेबल कॉइन इशुअर की कथित तौर पर न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जांच की जा रही है। NYDFS के एक स्पोक्सपर्सन ने चल रही जांच पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया है कि डिपार्टमेंट ब्रॉडली कंज्यूमर्स को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में निवेश से जुड़े जोखिमों से बचाने के लिए काम कर रहा है। Moving on, the Central Bank of Brazil will focus its first digital real test on determining the levels of privacy and security that can be achieved with the proposed central bank digital currency infrastructure. The test will be conducted later this year and will set up a simplified operation to transact with a still to be determined tokenized asset. मूविंग ऑन, ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज एल बैंक ने इटालियन रेगुलेटर OAM के साथ एक वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर किया है। रेगुलेटरी अप्रूवल एक्सचेंज को इटालियन यूजर्स को कई तरह की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की पेशकश करने की अनुमति देता है। 1 फरवरी 2023 को एल बैंक ने OAM के साथ वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया, जैसा कि क्रिप्टो एसेट्स पर इटालियन लेजिस्लेशन द्वारा आवश्यक है। 9 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाले ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज अब इटालियन ट्रेडर्स को सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रदान करने में सक्षम होंगे। रेगुलेटरी नोट भी एल बैंक को इटली में ऑफिसेज ओपन और अपनी टीम को एक्सपैंड करने की अनुमति देती है। Moving on, MoonPay, the fiat to crypto service founded in 2019, revealed that it has entered into a partnership with the NFT market LooksRare. Launched in August 2022, LooksRare was one of the first NFT marketplaces to actively reward traders with its own token, Looks. According to dappradar.com statistics on February 9, 2023, since its inception, the NFT market LooksRare has recorded $1.7 billion in sales. According to the announcement, MoonPay is introducing an NFT checkout integration with LooksRare that allows anyone to buy NFTs with a credit card. मूविंग ऑन, प्लूटस प्लेटफॉर्म पर सिक्योर क्रॉस चेन डीएप डेवलपमेंट को सुविधाजनक बनाने और ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी के नेटवर्क के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के इरादे से नया कार्डानो अपग्रेड, जिसे उचित रूप से वैलेंटाइन कहा जा रहा है, जिसे वैलेंटाइन डे के दिन पर जारी भी किया जा रहा है। कार्डानो डेवलपर इनपुट आउटपुट द्वारा 8 फरवरी को ट्विटर पर की गई घोषणा के अनुसार कार्डानो का वैलेंटाइन अपग्रेड, जिसे SECP के रूप में भी जाना जा रहा है, जो 14 फरवरी को मेन नेट पर लॉन्च होने वाला है, जबकि इसकी फंक्शनैलिटी 11 फरवरी को प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अवेलेबल होने की उम्मीद है। Moving on, the Ethereum NFT market was worth $9.3 billion at the beginning of 2022, according to DappRadar's valuation, and the figure dropped to $3.7 billion by year-end, a loss of 59.6%. The price of Ether impacted the valuations. The NFT market peaked in February 2022 at $19.1 billion, outperforming Bitcoin and Ether until the Terra collapse in May. By the following month, NFTs had lost 88% of their value. The market hit its very low at $2.2 billion at the end of November, the month of the FTX collapse. The market finished the year up 68% from that low. And now let's move on to our next segment, the weekly wrap. Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Virtual digital assets, or more popular known as cryptocurrencies, continue to suffer losses for the past few trading sessions and are on the way to post their first weekly loss of 2023 as investors continue to empty their wallets. The activity was further accentuated by the crypto exchange giant Kraken agreeing to shut its cryptocurrency staking operations to settle charges with the US Securities and Exchange Commission.
Bitcoin dipped below $22,000 Thursday and was recently down nearly 4%. Ethereum, the second largest cryptocurrency, followed BTC's trend recently, trading down 4.3% to $1,569. The selling was triggered by the Federal Reserve official voicing unitedly in favor of further rate hikes to tame inflation, even as the concerted efforts have proved beneficial so far. Crypto, being highly volatile, stands to lose its investment appeal in the current rising rate scenario. Now let's cut across to Manoj Dhara to get his perspective on how the market is performing. Manoj, you have been tracking this market very extensively. What are the positive takeaways from 2023 market performance? Absolutely. Cryptocurrency market plunged for the second consecutive day after the SEC accused California-based Kraken crypto exchange of offering an unregistered crypto staking program, calling it violation of the US securities law. So leading cryptocurrencies are feeling the heat from the increased regulatory move to tame investors' activity in this highly volatile and hard to categorize asset class. So as a result of which, Bitcoin is trading lower by 5% at $21,900 to its lowest level in about 2 weeks. And much of the decline came after crypto exchange Kraken bowed down to US Securities and Exchange Commission, the financial markets regulator in the US, wherein Kraken has asked to discontinue with the crypto staking as a service platform for the US. This is the big concern which is actually driving the markets lower. And customers were actually were forced to pay $30 million towards penalty. And if we talk about inflation and its impact going forward, it's not really cooling off, and the decline seen so far has been distorted by some falling goods in prices, implying that the US central bank could maintain higher interest rates for longer going forward. That's what analysts are saying. And comments from the Federal Reserve's official that a recession is looming in the world's largest economy infused the entire global market with fear, and hence the cryptocurrency markets are trading lower. Manoj, since you're talking about a lot of optimism in 2023, so what are the top events to look out for in 2023? Absolutely, there are many events to watch going forward, but top 3 events we will highlight for our viewers. One such event is the G20 meet, which is scheduled later in the month, wherein a singular event has given India an opportunity to shape global policy for everything involving crypto. So there is a lot that could happen for the crypto industry in India and how the nation regulates it, and it is the most important event as far as the crypto ecosystem in India is concerned. And what India does during its G20 presidency may provide some clues for the entire globe going forward. The second important event is Ethereum upgrade, which is scheduled in the first week of March. As we all know that the Shanghai upgrade is coming in the month of March, it will be a trend-setting event after the protocol has shifted from the PRW to POS in August and September 2022. The third event, which I'm talking about, is the Mt. Gox event, which could have been an interesting turn, wherein one of the events as the repayment registered decline, wherein the deadline has moved to March 2023, as the Mt. Gox was once the biggest crypto exchange, handling 70% of the global Bitcoin trading volume. The payment method will be decided in the upcoming registration deadline, wherein roughly around 140,000 Bitcoin will find their way into the market, and selling to the tune of $3.5 billion can be triggered if they decide to sell. Thank you. Thank you, Manoj, for your in-depth market analysis. And now, moving on, India's Economic Affairs Secretary Ajay Seth reportedly said Saturday at a post-budget press conference in Mumbai that India will introduce measures around crypto this year. Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman reportedly stated Friday in a post-budget interview with Network 18 Group that she will be looking at developing a global standard operating procedure for regulating crypto assets in her upcoming G20 meeting. Under India's presidency, the first meeting of G20 finance ministers and central bank governors is scheduled to be held on February 24th to 25th in Bengaluru. तो रुचि, जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट 2023 में कुछ ना कुछ तो इनके लिए होने वाला है, लेकिन यहाँ क्रिप्टो वर्ड का कोई जिक्र भी नहीं किया गया। और अभी सभी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये G20 प्रेसिडेंसी से है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये भी कहा है कि जो G20 प्रेसिडेंसी है,
क्योंकि इंडिया उसे लीड कर रहा है, सो इट ऑफर्स अस अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। राइट, और ये कई बार निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने ये कहा है कि वो जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हो गए रेगुलेशन के रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज या फिर Web3 टेक्नोलॉजी को लेकर, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली में हर किसी की नजर है कि इस G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया क्या प्रस्ताव रखता है। बिल्कुल, जो 24 से 25 को बैंगलोर में होने वाली है। बिल्कुल। Moving on, Indian crypto exchange WazirX said it was transferring funds held with Binance for its operations to other wallets after Binance said it was cutting off the service, the latest in a running dispute between the two companies over their relationship. WazirX said in a tweet that it was in the process of transferring the funds and expected to complete the job within hours. Users can continue to trade, deposit and withdraw funds as usual, the tweet continued. Your funds are safe with us. The amount of the funds being transferred wasn't disclosed. तो विशाखा, ये लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि ये जो है एक कॉन्फ्लिक्ट बाइनेंस और WazirX के बीच में रहा है, ओनरशिप को लेकर रहा है। बहुत सारी बातें की गई, बहुत बयानबाजी हुई, बहुत ट्वीट एक दूसरे के लिए इन्होंने किए। अब फिलहाल बात ये चल रही है कि बाइनेंस ने साफ कह दिया है कि WazirX कहीं भी अपने पेपर्स में WazirX का नाम भी नहीं जो है वो शो कर सकता। वहीं चैनपिंग जाओ और निश्चल शेट्टी के बीच में हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा है, और इधर निश्चल शेट्टी जो है वो पहले से अड़े हुए हैं कि बिल्कुल भी हम ये नहीं मानेंगे बाइनेंस की बात, क्योंकि पहले भी सीजी ने जो है उन्होंने ये 2 कंडीशंस रखी थी कि पहला उनकी टर्म्स ऑफ सर्विस में बाइनेंस का नाम कहीं ना हो, और ये भी कि बाइनेंस उन्हें ओन करता है, ऐसा कुछ भी जिक्र ना हो। लेकिन निश्चल शेट्टी ने यही इस पे वो अड़े रहे हैं कि ये मीडिया प्रेशर हमारे ऊपर ला रहे हैं और हम बिल्कुल भी ये बातचीत नहीं मानने वाले। तो इसकी वजह से अब बाइनेंस ने ये एक्शन लिया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या इनके, क्योंकि शायद ये भी कहा गया कि बाइनेंस ने कहा था कि मैं जो है 3 फेब या 9 फेब तक जो है वॉलेट्स को बंद कर दूंगा, जो भी WazirX के वॉलेट्स है। इसीलिए WazirX अभी से ही थोड़ी सी तैयारी कर रहा है और अपने सारे जो ट्रांसफर हैं जो फंड्स को वो कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे ये जो स्टोरी है क्या रुख लेती है। बिल्कुल। Moving on, FTX told the political world Sunday the bankrupt crypto exchange wants its money back after millions of dollars flowed into the hands of candidates and action committees under the direction of founder and former CEO Sam Bankman-Fried or others in his regime. तो रुचि, पहले से हम देखते आ रहे हैं FTX को पूरा कवर हमने किया कि जिस तरह से ये बार बार एक वेब सीरीज की तरह ये सारे एपिसोड्स आते ही जा रहे कि अब ये नया मोड आया है। तो इस बार जॉन जेरी 3 जिन्होंने ये बैकमैन फ्रीड के बाद ये जो पद संभाला है, तो अब वो चाहते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जिनको फंड्स ट्रांसफ़र किए गए थे बैकमैन फ्रीड के थ्रू, वो सभी अपने फंड्स वापस कर दें। नहीं तो अगर ऐसा पहले तो वो कर दें, अगर नहीं तो जो FTX है वो लीगल एक्शन लेने वाला है और बिल्कुल उन पे इंटरेस्ट लगने वाला है सभी पे। तो देखते हैं 196 पॉलिटिशियंस हैं, 5 पॉलिटिशियंस ने पैसे वापस कर दिए, अब बाकी के जो बचते हैं 191 वो कब तक फंड्स देंगे नहीं देंगे, क्या होता है, let's see. So moving on, the Virtual Asset Regulatory Authority, the Dubai-based regulator in charge of enforcing cryptocurrency laws, has issued new guidelines for virtual asset service providers operating in the Emirates. The rules apply only to market participants in Dubai, with the exception of those operating under the Dubai International Finance Center, a free zone governed by its own regulator. Violators will be fined between $5,500 and $55,000, with repeat offenders facing a fine of up to $135,000. तो विशाखा, ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से सारी जो कंट्रीज है अराउंड द ग्लोब वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर या फिर Web3 को लेकर जो है अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रही है, क्योंकि वो उससे इस पूरी इंडस्ट्री को ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मिलती है और ज़्यादा चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन भी होती है, बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो जाती हैं और एक लीगल आप लाइन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी अपने रूल्स को लेकर दुबई बहुत स्ट्रिक्ट है और यहाँ पहले ही ये बता दिए, रूल्स चाहे बताए अनाउंस किए नहीं किए, लेकिन ये बता दिया कि अगर आप गलती करते हैं तो फाइन जो है $5,500 से लेकर $55,000 तक हो सकता है, और अगर आप रिपीटेडली करते हैं तो $135,000 का फाइन लग सकता है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि दुबई पहले से ही, क्योंकि मेटावर्स को देखा जाए तो भी इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल पक्की है और क्रिप्टो को लेकर भी अब तो वारा ने ये जो न्यू रूल्स लेकर आए हैं, तो मेटावर्स के लिए भी इन्होंने ये जिक्र किया कि यूके में जैसा हुआ उसके बाद से ये नहीं चाहते थे कि एक लेफ्ट आउट जैसा फील करवाया जाए। तो मेटावर्स एज वेल एज जो वर्चुअल एसेट्स हैं उनके लिए ये न्यू रूल्स ये लेकर आए हैं। तो आई एम श्योर कि जो बाकी की कंट्रीज हैं वो भी ज़रूर ये पढ़ना चाहेंगे और इस पर ध्यान देंगे कि और उनको फॉलो करने आए हैं। बिल्कुल। Moving on, the cryptocurrency community has raised and pledged more than $11 million in less than 48 hours after
two powerful earthquakes struck Turkey and Syria, killing over 9,400 people and injuring many more. A number of cryptocurrency exchanges have made significant pledges, led by Binance, which will airdrop $100 worth of BNB to all of its users in Turkey's hardest hit regions, nearly $5 million. In total, $9 million has been promised. Tron founder Justin Sun has pledged $1 million in TRX for the Dubai Global Exchange. And Turkish rock star Haluk Levent was able to obtain a special exemption from the country's crypto ban, establishing a trio of multi-sig wallets that have attracted over $2.7 million in funding, including $1 million from the Avalanche Foundation in AVAX. तो रुचि वेब3 कम्युनिटी कभी भी पीछे नहीं रहती, चाहे वो कोविड टाइम को या फिर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, और अब टर्की में जहां बताया जा रहा है कि अराउंड 20,000 ये डेथ टोल पहुंच चुका है, तो वहां के लिए भी चाहे बाइनांस हो या बिटफिनिक्स हो, कीक हो या DogeCoin है, बिल्कुल, तो सभी ने एक साथ मिलकर अराउंड $11 मिलियन का फंड इकट्ठा किया, जो बहुत बड़ी राशि होती है। और वही चाहे पूरी मैं कहूँगी कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज एकजुट नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की अपनी जो इकोसिस्टम है वो एकजुट है, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए वो साथ में खड़े हेल्प करने के लिए, which is a very, very good thing. Exactly. So moving on, WeTransfer has made its first foray into the NFT space by partnering with Minima, a Swiss blockchain company. The collaboration will see two companies deploy NFTs on Minima's network, which will go live in 180 countries in March, giving creators rights management for their digital property. Minima was founded in Zug, Switzerland in 2018, in a town known for its crypto startup ecosystem. तो हम देख रहे हैं कैसे अलग अलग जो कंपनीज हैं वो आगे आ रही हैं और ब्लॉकचेन की जो पोटेंशियल है उसको समझ रही हैं और ब्लॉकचेन तकनीक को अपना रही हैं, और अब WeTransfer जो है नया नाम है जो इस लिस्ट में जुड़ गया है। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ मिनिमा और WeTransfer के पार्टनरशिप के बाद 180 कंट्रीज में ये लाइव होंगे। बिल्कुल। Moving on, Indian Web3 social video app Chingari has partnered with the Aptos blockchain to provide infrastructural support for its Web3 product base, according to a Wednesday blog post from Chingari. Chingari's partnership with the Aptos blockchain also aims to facilitate transactions, increase transaction speeds, and bolster the platform's security. The price of Chingari's native token Gari soared roughly 48% to a high of $0.083 in the minutes after news of the partnership broke. तो चिंगारी के साथ ये जो पार्टनरशिप की गई है, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इसके साथ साथ बहुत ही स्मूथ ट्रांजैक्शन यहाँ, और इसके जो टोकन है वो भी 48% तक बढ़ गया जैसे ये खबर सामने आई। ये हमेशा होता है जब भी कुछ पॉजिटिव खबर आती है, कुछ सक्सेस की नंबर सामने आते हैं, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है पूरी मार्केट में बनता है और उससे हमेशा जो कॉइन्स को भी फायदा मिलता है, नहीं तो जिस कंपनी की बात है उसका कॉइन को तो हमेशा उसका फायदा मिलता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। According to a BBC report, the global police agency Interpol is looking into how it can investigate crimes in the metaverse. Interpol's Secretary General Jürgen Stock told the BBC that the agency is working hard to respond to sophisticated and professional criminals who are adapting to any new technological tool available to them in order to commit crimes. Interpol's VR space allows police officers to experience what the metaverse might be like, giving them a sense of what crimes might occur and how they might be policed. एक्चुअली ये बात सही भी है क्योंकि बहुत पिछले साल इतने सारे क्राइम्स हुए, हैक्स हुए, रग पुल्स हुए। इनफैक्ट अक्टूबर में तो मैक्सिमम, इसलिए उसको हैकटोबर कहा गया था अक्टूबर को, क्योंकि इतने सारे हैक्स हुए थे। तो अगर इंटरपोल को एक्चुअली पकड़ना है इन लोगों को, ये जो सब हैकर्स हैं जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझने पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। आई थिंक दैट्स व्हाई इंटरपोल इतने एफर्ट्स डाल रहा है कि अब VR मेटावर्स को समझना और VR ग्लासेस के साथ पूरा उसको अच्छे से छानबीन करना कि एक्चुअली कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स के माइंड को रीड करना कि वो किस तरह से इसमें कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढ पाते हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स के लिए बहुत ही अच्छा चांस है क्योंकि वो खुद ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे दिख सकता है या कैसे वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि जैसे कि आपने बात की क्राइम्स की, तो पहले से हम देखें तो मेटावर्स है, तो मेटावर्स की जैसे हमने बात की तो पहले भी जो मेटा है, मार्क ज़करबर्ग का होराइजन वर्ल्ड्स है, उसमें भी एक फीमेल थी। तो ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, बहुत ज़्यादा बातचीत की लोगों ने इसके बारे में कि वहाँ पे उसे कुछ
ऐसे शोषण हुआ जी बिल्कुल ऐसे शोषण हम बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से भी और काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स जैसे कि आपने कहा कि बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये है इंटरपोल की तरफ से। Moving on, Samsung, the Korean mobile company, has announced that it will soon enter the market for Metaverse and VR headsets. The company announced that it is already working on extended reality hardware, implying the development of a VR headset. TM Rowe, head of Samsung Mobile Experiences, confirmed that such a device is in the works but did not provide a release date. He did, however, mention Qualcomm, the fabless chip maker, and Google as partners. According to Rowe, Samsung's new device will be powered by a Qualcomm chip specifically designed to perform better in virtual reality applications and will run a Google-powered operating system. So we can clearly see tech giants are betting big on Metaverse, क्योंकि पहले Apple और मार्क ज़करबर्ग सबके अपने मेटा के वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स हैं। तो अब यहाँ पे इन्होंने भी एक ये इनिशिएटिव लिया है और सैमसंग ने ये जिक्र भी किया कि हम पहले नहीं उतरे मार्केट में, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से जो, क्योंकि बाकी के भी मेटा हो, मार्क ज़करबर्ग हो या एप्पल हो, उन्हें भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से, लेकिन अब फाइनली सैमसंग ने भी ये इनिशिएटिव। तो आई थिंक क्वालकॉम की जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसके साथ और गूगल की पावर के साथ कुछ बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी हम सामने आते हुए देखेंगे। So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishaka Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great weekend.